Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है. और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्यम. Thank you, Ambrish. The top stories. Foreign investors pull out more than 14,900 crore rupees from Indian equities market in January so far. And domestic share markets logged gains of around 0.5% for the week ended on Friday. Sensex closes above 60,600 level, while the Nifty settles above 18,000 mark. विदेशी निवेशकों ने जनवरी में भारत के इक्विटी बाजार से लगभग 14,900 करोड़ रुपए निकाले. घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 0.5% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 60,600 और निफ्टी 18,000 अंकों के ऊपर बंद हुआ. और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने जनवरी में भारत के शेयर बाजार से लगभग 14,900 करोड़ रुपए की रकम निकाल ली है. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों से 15,236 करोड़ रुपए और डेट बाजार से 873 करोड़ रुपए और हाइब्रिड बाजार से 114 करोड़ रुपए निकाले. इस तरह एफपीआई ने डेट बाजारों के वॉलंटरी रिटेंशन रूट वीआरआर में 1,286 करोड़ रुपए डाले. जनवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 14,937 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं. Well, let's start taking phone calls. As you know, this is an interactive program where we take phone calls from our listeners on any questions, queries and doubts that they have on mutual fund and related issues. Joining us first this evening is Animesh from Kolkata. Good evening, Animesh, and welcome to Market Mantra. Good evening. Yeah, go ahead. Put your question. This is Animesh Bhattacharya from Kolkata. Sir, I have a question for you. Some experts predict that 2023 is going to be the year of recession. So will this year of recession affect our share market adversely, or our share market will go smoothly? Please, sir, answer this question. Thank you. Yes, Dhirendra. Very difficult to guess that, how, if there will be a recession and what will be the magnitude or depth of the recession. But undoubtedly, the talks being, the talk about the global recession, or at least the recession in the developed world, look quite imminent. And if that is the case, I think it is already beginning to show some impact on our market.
Our markets, I'm very unsure about recession in the domestic market, though we are witnessing that there is inflation. The central bank is acting with to combat inflation or to target inflation, but I really wonder that it will be severe of a scale where we could, we have to prepare ourselves something like what happened in 2008. Yes, the global recession or the recession in the developed world, which can have ramifications for us, looks imminent. Looks imminent primarily because, for 30 years that part of the world has not been used to inflation, and it has not been used to the interest rate going up at a scale. From 0 to 4 looks like a very severe thing. But for us Indians, we have been very much used to the scale of inflation as well as interest rates. So yes, there will be recession. There will be global recession. It might have mild effect or severe effect on some sectors. But I really wonder that you can really anticipate, because the timing of it, the scale of it, all of it is unknown. So I would say that one should be more guided by your own principles, your own needs, your own situation, your own investment time frame and risk tolerance than trying to anticipate the global or the Indian macro. और दिल्ली से हमारे श्रोता राधेश्याम लाइन पे हैं। राधेश्याम जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले हफ्ते अपने ब्रांच में गया था एफडी बनवाने के लिए, तो सर उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए। मैंने जी म्यूचुअल फंड में क्या तरीका है? उन्होंने कहा 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, लंबे टाइम के लिए 5 साल 10 साल जी। तो हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है। थोड़ा आप तरीके से हमें ये समझाइए कि किस ढंग से पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड में बैंक के थ्रू जी, और कैसे करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा अलग से, या कोई हमें एजेंट के थ्रू जो होना पड़ेगा। राइट मैं आपको सारी विधि बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में लगाने का आपके पास 2 तरीका है। इस सवाल का जवाब एक तरह से 2 पार्ट में है। एक तो कि आप बाजार में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते कैसे हैं। म्यूचुअल फंड में आप सीधा पैसा लगा सकते हैं बिना किसी इंटरमीडिएटरी के जरिए भी। उसे डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। उसका खर्चा थोड़ा कम होता है और उसमें 5 साल 10 साल में आपके रिटर्न थोड़ा ज्यादा होंगे। और दूसरा जरिया है, आप बैंक के जरिए लगाएं, किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए लगाएं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए लगाएं। यहाँ पे आप रेगुलर प्लान में लगाते हैं जिसका खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। ये आधे प्रतिशत से 1% सालाना खर्चा यहाँ पे ज्यादा होता है किसी इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में। दूसरे और इनके जरिए जब आप लगाते हैं तो आप इनकी जिम्मेवारी है कि आपको गाइड करें और सारा पेपर वर्क भी आपके लिए करें। दूसरा जरिया जो सीधे तौर पे लगाने का जो तरीका है, उसमें आप म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे या बहुत सारे ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना काफी सुरक्षित है, क्योंकि जब आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी में आपके खाते से पैसा कटता है और सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। बीच में ये पैसा किसी और के पास नहीं रहता है। किसी भी, भले ही आपकी कोई मदद कर रहा हो, किसी के जरिए आप लगा रहे हो, लेकिन आपका पैसा सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है। और दूसरा जो सुरक्षा का एक अच्छा खासा एक प्रावधान किया गया है कि म्यूचुअल फंड में जब भी कभी कोई पैसा रिडीम होगा तो वो सीधा आपके खाते में ही आएगा, वो किसी और के पास नहीं जाता है जो आपको आपका पैसा देगा। तो सुरक्षा के नजरिए से म्यूचुअल फंड का डिजाइन जो है वो काफी सुरक्षित है। दूसरा कि आप फंड का चुनाव कैसा करें, या दूसरा आपको कोई सलाह कैसा देगा। यहाँ मेरी सलाह होगी कि आपको एक बेसिक प्रिंसिपल, आपको अगर आप किसी की सलाह ले भी, किसी के जरिए भी लगाएं, तो सवाल आप पूछें, क्योंकि पैसा आपका है। और ये सवाल ये है कि हमेशा पूछे कि ये क्यों लगाया जा रहा है। लंबे समय के लिए इक्विटी में पैसा लगाएं, लेकिन शुरुआती निवेशक हैं, पहली बार लगा रहे हैं, बाजार की गिरावट से आप परिचित नहीं है, तब आपको हमेशा किसी ऐसे फंड में लगाना चाहिए जिसका अधिकतर पैसा इक्विटी में लगाओ, लेकिन सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाओ। ऐसे फंड है कुछ इक्विटी सेविंग्स फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इनमें इन फंड्स में सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा होता है। शुरुआती निवेशक के लिए अच्छी शुरुआत इसमें ही होती है। दूसरा कि जब भी आप कभी बाजार से जुड़ा हुआ निवेश करें, एक मुश्त पैसा ढेर सारा ना लगाएं, धीरे धीरे SIP के जरिए लगाएं, जिसकी आप अक्सर चर्चा सुनते होंगे।
और अगर आप ये दो चीज का और लंबे समय का पैसा ही लगाए, अगर आप ये 2-3 चीज का ख्याल रखते हैं तो यहाँ पे आपको महंगाई से ज्यादा, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और मिलने की संभावना है और लंबे समय में मिलेगा। हो सकता है कि 6 महीने साल भर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तब शायद या क्योंकि कम समय में बाजार काफी उतार जाता है, लंबे समय में बाजार ने ज्यादा रिटर्न दिया। और खासकर अगर ये दो विधि आप अक्वायर करते हैं, दो तरीके से लगाते हैं कि आप धीरे धीरे लगा रहे हैं और लंबे समय का पैसा लगा रहे हैं, आपके नुकसान की संभावना बिल्कुल घट जाती है। Yeah, and joining us next is Abhishek from Delhi. Good evening, Abhishek, and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening, guest. Yeah. I'm Abhishek from Delhi. So my basic question is, when we talk about mutual fund, there is one expense ratio. Mm-hmm. So if I'm going through any broker, would I need to pay any additional charges apart from that expense ratio? That is my question. No, you don't have to pay any additional charge if you are investing in the direct plan or investing in the regular plan. If you are investing through a broker, you are not supposed to pay any additional charge. The cost of transaction is embedded in the expense ratio. When you invest in the regular plan, the expense ratio is higher as compared to the direct plan, and that is all there to it. You don't have to pay any additional cost. और दिल्ली से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? My question is, in between gold fund and debt fund, which is more safe? Okay. Yeah. There are two, debt funds are safer because gold has turned out to be a fairly volatile asset class. In fact, if you look at what has happened to gold since in the last 2 years, it has gone up. Gold turns out to be a great asset class when there is talk of calamity, when everything looks uncertain. There is great uncertainty about where are we headed, is the world coming to an end, or there is, complete uncertainty. When equity and debt also struggle. But otherwise, there are periods when gold because gold is a good store of value, but it may not be a great investment avenue which has the potential to beat inflation. Also, fixed income, the debt fund also may not be able to beat fixed inflation, may not be able to beat inflation, but it can get pretty close. And in terms of consistency of delivering returns, debt funds look more promising. Right. And before we take more calls, let's move on and take a look at the stock markets as well. The domestic share markets logged gains of around 0.5% in the week ended on Friday. The BSE Sensex closed above the 60,600 level and the Nifty settled above the 18,000 mark. In a highly volatile week, the Sensex and the Nifty both added mixed global cues. Both indices actually settled lower in 3 out of 5 trading sessions. During the week, the Sensex rose 361 points or 0.6% to settle at 60,622, while the Nifty 50 index rose 71 points or 0.4% to close at 18,028. In the broader market, in the BSE, during the week, the mid-cap index fell 0.66% and the small-cap index declined 0.9%. And we have Pranav joining us on the program from Siliguri. Good evening, Pranav, and welcome to Market Mantra. Okay, good evening to all of you. Yeah, good evening. Go ahead, put your question. If one wants to invest in mutual fund without taking much risk, what should be the best option for him? Number one. Number two, what is your prediction about the bond market in near 3 to 4 years? Number three. Yeah. Few bonds are coming from the State Bank of India, some of fixed maturity plan, some are open-ended. What should we determine the best for such a person? Okay. If I'll go in the reverse order, and for risk-averse person, there are
there are different schemes, there are different kind of funds which should be a preferred route. And there are different vehicles meant for long-term investor and short-term investor. If you are looking at short-term, then fixed income funds are the only avenue which you should consider. And with that in mind, I think a safe bet will be a short-term debt fund which is reasonably insulated, because there are two kind of risk which debt funds are exposed to. One is the interest rate risk. Interest rate risk is when interest rates go up, bond funds, and particularly bond funds which hold longer maturity papers, they decline in value. So you might be investing in a bond fund, but you can lose money if interest rates go up, as it did in the last 6-8 months. So to protect yourself from that, investing in short maturity funds, shorter term debt funds is a relatively safer bet, and to keep it simple. And if you're investing for few days, few months, don't go any further beyond short-term debt, ultra short-term debt fund or liquid fund. So these are the safer bets. When investing in equity, equity is very safe if you are investing for the long term, and if you are investing periodically, if you are not investing at one go. And with that, but still for new investors, there are different vehicles. There are funds which invest 75% into equity, 25% into debt. These are called aggressive hybrid fund. If you're investing for 10 years and more, you don't want to be exposed to huge, volatility. These could be relatively better bets. But you should not forget that other two rules, which is investing your long-term money and investing gradually. Second is, if you want even lower return, even lower risk, then you should consider a balanced fund which is equally invested in equity and debt, or a equity saving fund, which is typically a third of it in equity and 2/3 in fixed income. They turn out to be much safer, and it is particularly useful for investors who are not used to the equity market. After 2-3 years of getting used to the equity market, then only you should consider investing in an all equity fund. और दिल्ली से हमारे श्रोता विनीत लाइन पे हैं। विनीत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैंने दिसंबर 2016 में क्वांटम के टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, और सर मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मैं इसी फंड में बना रहा हूँ या फिर यहाँ से निकल करके किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा अच्छे रिटर्न के लिए। थैंक यू सर। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं हो तो टैक्स सेविंग फंड से पैसा निकालना जरूरी नहीं है। आपका डिसीजन पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है कि क्वांटम टैक्स सेविंग फंड क्या अच्छा फंड साबित हुआ है इस लंबे समय में। ये बहुत शानदार फंड साबित नहीं हुआ है काफी लंबे समय में, तो आपको कोई दूसरा विकल्प देखना चाहिए। Yeah. And Dhirendra, to talk about other issues related to mutual funds, there have been reports that a lot of SIP have been closed down. What could be the possible reason? There are two reasons. One is that, there is a lot of people invested and they saw a decline. And immediately thereafter, last 1 or 2 months, we have seen the upsurge in the market. And when you continue investing in your SIP and you saw a decline, and then and you continued investing, and then it has gone up. So many investors, once they see substantial, increase in value of their investment, particularly small investment made through SIP, they tend to pull out. So despite this, the number of SIP in Indian mutual fund is still rising, still growing at a fairly rapid pace. Despite that, a lot of investors who are pulling out, that will be entirely because they see handsome return. Yeah. They need the money. Okay, fine. And let's also go back to some of the questions which, one of our callers, Pranav, put regarding the bonds. What all options do we have as laypersons, as initial investors, when people want to invest in bonds through mutual funds? Yeah, he had two more questions which I did not answer earlier. Yeah, because, he was asking about fixed maturity plans versus other open-end debt funds. Yeah, I would say that fixed maturity plans are desirable. Particularly at a time when interest rates are pretty uncertain and there is a likelihood of they going up. Because when you invest in an open-end fund and
interest rates go up. Your open-end debt funds go down in value. When you invest in a fixed maturity plan, if you invest with a time frame which matches with your investment requirement or your investment time frame, then the likelihood of, you don't suffer any losses in the interim because you have invested in almost like a fixed deposit in a mutual fund format. So, if you are sure of your investment time frame, invest in a S&P. If you are investing in your periodic surplus or money which you might need at a short notice, then consider a short-term, debt fund or a ultra short-term bond fund. His other question was, what is the outlook of interest rates over the next 3-4 years? The outlook is that, interest rates might go up a little bit, but over a period of time, it will come down, and it will come down quite well, quite reasonably. So with that in mind, I think, if you are investing in a short-term bond fund or even little, medium-term bond fund, in a 3-4 year time frame, you will end up with, beating fixed deposit rates well. जी धीरेन्द्र जी, कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु साहा जी भी लाइन पे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, I Atanu from Kolkata. Sir, I am a regular listener by using news on AIR.com, sir. One point, my question, how do we utilize NSE 50 scripts by paying mutual fund? Mm-hmm. Sorry, I didn't get your question, please. How do we use NSE that is 50 script, which inside 50 script NSE by the help of mutual fund? Okay. NSE, the Nifty 50 index is available, and it is available in 2 formats, and they are available at a very low cost. So if you want to invest in 50 stocks at one go, the index fund is available. The cheapest one is offered by SBI. It has turned out to be the biggest fund in the shortest time period, and it's a huge fund, and it is able to replicate the return generated by Nifty 50. Yeah, and Dhiren, just for the benefit of our listeners, since we are talking about this aspect, tell us what is a passive fund and an active fund? What is the basic difference? Yeah, the basic difference is, when you invest in a mutual fund, the active fund, you entrust your money to the mutual fund manager and you tell him that, okay, manage my money and try and deliver me the best possible return using your judgment and imagination. And when you invest in a passive fund, it is normally, it is referred as the index fund or the index. And here you say that don't give me more, don't give me less, give me exactly as much as the index. And the way it is achieved is, your money is invested in those stocks of the index exactly in the same proportion. Okay. This is how you are able to derive exactly as much return as the index. Right. And let's move on and take our next caller. We are now joined by P.K. Banerjee from Shimla. Good evening, Mr. Banerjee, and welcome to the program. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे जी, अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाएंगे तो क्या एक इकट्ठा लगा सकते हैं, क्या हमें मंथली ही लगाना पड़ेगा? कितना लॉन्ग टाइम के लिए इसका पीरियड होता है? कोई एक पीरियड डिसाइड होता है क्या इसमें कि 5 साल तक आप रख सकते हैं और निकाल सकते हैं? एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट क्या अपनी कमीशन भी लेता है और गवर्नमेंट में टैक्स कटता है क्या? कोई पेपर वर्क है जो हम उसको पढ़ के और अच्छे से समझ जाए? बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए बैनर्जी साहब। बहरहाल धीरेन्द्र जी इसका जवाब देंगे। रंगा, आप मेरी सुविधा के लिए एक एक करके सवाल जरा मुझे बताएं। जी। जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंप सम लगाना जरूरी है या धीरे धीरे लगाया जा सकता है? सबसे पहले तो इन्होंने ये पूछा है। अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो आप लंप सम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो अपनी इसमें बने रहने के लिए अच्छा रहेगा कि आप धीरे धीरे पैसा लगाएं, हमेशा SIP के जरिए लगाएं। जी। और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई जो एजेंट होता है वो अपना कमीशन या कोई उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है क्या? जी हाँ, जब आप किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए लगाते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है और वो कमीशन आपको नहीं देना होता है, वो आपके म्यूचुअल फंड के दाम में ही जुड़ा रहता है।
तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाएं जिसमें आप एजेंट के जरिए नहीं लगाते हैं, उन्हें डायरेक्ट प्लान कहा जाता है, उनका खर्चा कम होता है। तो दोनों ही स्थिति में आप किसी भी एजेंट को आप सीधा पैसा नहीं लगाते हैं। और तीसरा प्रश्न जो मुझे याद आ रहा है कि आप पूछ रहे थे कि कहाँ पढ़ के समझ करके आप खुद निवेश कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड की बेसिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा फंड उचित है। और म्यूचुअल फंड में लगाने का आपके पास 2-3 सीधा जरिया भी है। एक तो कि आप म्यूचुअल फंड जब आप किसी फंड का चुनाव कर लें कि किस तरह के फंड में लगाना चाहिए और किस फंड में खासकर लगाना चाहिए, तो उसके बाद आप बहुत सारे फिनटेक्स है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड में लगा पाते हैं और लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में लगाने का जो तरीका है वो काफी आसान हो गया है। कंप्लीटली डिजिटल भी ये निवेश कर पाना संभव है अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है और आपके पास आधार कार्ड है। और आप एक बार पहले शुरुआत में आपको KYC करना पड़ता है और उसके बाद फिर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि डेट फंड में भले ही आप लमसम लगा दीजिए, इक्विटी में हमेशा SIP कीजिए। जी, और कोलकाता से हमारे श्रोता राजीव लाइन पे हैं। राजीव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार धीरेन्द्र जी, मैं धीरेन्द्र जी आपको कई सालों से फॉलो करता हूँ, उससे लाभ भी हुआ है। मेरा एक प्रश्न था कि मैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 में SIP चला रहा था, वो पिछले कुछ महीनों से बंद है जी। तो उसमें कंटिन्यू किया जाए या फिर उस SIP को क्लोज करके कहीं और इन्वेस्ट किया जाए? वो तो अभी बंद ही है जी। चूंकि उसमें उस फंड ने पैसा लेना बंद कर दिया है और आपके पास दूसरे विकल्प नेस्डेक 100 के हैं जिसमें पैसा अभी जिन पैसा अभी भी उन्होंने लेना जारी रखा है। इस फंड ने पैसा लेना बंद इसलिए किया है क्योंकि RBI का एक सीलिंग था जो मोतीलाल ओसवाल के फंड ये हिट कर चुके थे, जिससे ऊपर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। कोटक का या 1-2 फंड कंपनी और है जिनका नेस्डेक फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें जो आपका पैसा लगा हुआ है वो भले ही लगे रहने दीजिए, जो पैसा आपका लगना बंद वो किसी दूसरे फंड में लगाने की शुरुआत आप कर सकते हैं। Yeah, and we have Gaurav joining us from Ghaziabad. Gaurav, welcome to the program. Put your question quick. Good evening. My question is about Focus Equity Fund, Mira Asset. It has not done well in last 1 year, despite being SIP is also not doing well. What is the reason for Focus not doing well? And second question is, just how long this all recession, everything will happen so that the FII will pull out and... Right. But yeah. Yes, Dhirendra, about Mirae Assets Focused Equity. It did miss out on one particular, when we saw the cyclicals making a big comeback, it did miss out. But I think overall this fund has been a great fund, and there will be occasion, there will be situations when some fund manager will miss out on some big trend emerging, and which has translated into little disappointing return, but not. I would not say that it's a complete washout. So I would say hold on, keep your patience, and about these recessions or equity markets are like this only. You will always have some great concern or something or the other going on. Right. Despite that, I have never come across a situation that it is all good news and the market keeps going up and there is no reason why it will come down. Right. Like that. Yeah. We are moving towards the end of the program and we'll have to call it a day. We would like to thank all our callers for their active participation in today's program. धीरेन्द्र, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pull out more than 14,900 crore rupees from Indian equities market in January so far. And domestic share markets log gains of around 0.5% for the week ended Friday. Sensex closes above 60,600 level while the Nifty settles above the 18,000 mark. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.